नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी के इस लाइव इंटरैक्टिव सेशन में। मैं हूं आपकी मेजबान सिमरन सिंह। आप सब हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं पीएमई विद्या के चैनल नंबर 9 से 12 पर, यानी पीएमई विद्या चैनल नंबर 9, 10, 11 और 12। साथ ही हमसे रब्ता करने का एक और जरिया है, आप जानते हैं हमारा यूट्यूब चैनल है एनसीईआरटी ऑफिशियल। So it's around 10 a.m. on your watch, and as we promised in our last session that we'll be here on 20th May discussing about some of the most interesting topics. So here we are in our webinar series, that is listening to learn. So very warm welcome to all our viewers in this webinar series, and I'm delighted to inform you that we started our webinar series in August 2021. And till now we have covered around 32 sessions with esteemed guests and panelists. Just to name a few for all our viewers, we have had our session regarding institution of Nobel Prizes, which was delivered by Dr. Syed Hassan Shahid Rizvi. Apart from that, we also discussed about radiocarbon dating, principles and applications. It was delivered by another special guest, Dr. Chandra Mohan Nautiyal. And in our last episode, we provided you all the information about dinosaurs, dead but doing well. So these sessions are brought to you by Department of Education in Science and Mathematics, NCERT. So you must be willing to know that what is it we are going to discuss today. So you might know it that here we'll get to know everything about gravitational lensing, यानी गुरुत्वीय लेंसिंग। तो यदि आपके कोई भी सवाल हो पूरे सत्र के दौरान तो बेझिझक हमें लिख भेजिएगा एनसीईआरटी ऑफिशियल के कमेंट सेक्शन में। इसके अतिरिक्त एक कॉन्टैक्ट नंबर फ्लैश हो रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, तो आप नोट कर सकते हैं इस कॉन्टैक्ट नंबर को। यू मे गिव अस अ कॉल एट 8800440559। इसके अतिरिक्त कुछ मेल आईडीज भी फ्लैश हो रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, जैसे dth.class12@ciet.nic.in। तो यदि आपके कोई भी सवाल हो हमारे पूरे सत्र के दौरान तो बेझिझक लिखकर भेज दीजिएगा इस मेल आईडी पर, और एनसीईआरटी ऑफिशियल के कमेंट सेक्शन में तो आप हमें लिखकर भेज ही सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमेशा हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ते हैं इस चर्चा के लिए, तो आज भी हैं हमारे साथ दो मेहमान। चलिए उनसे आपका तारुफ कराते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं गगन गुप्ता सर। नमस्कार सर। नमस्कार सिमरन जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। DESM NCERT से हैं। आप अपना संपर्क हमसे साध सकते हैं और सारे मीडियम्स आप तक पहुंचा दिए गए हैं। अब मैं सर से निवेदन करती हूं कि सर हमारे साथ एक खास मेहमान और भी हैं आज के इस सत्र में, तो आप उनका तारुफ कराइए हमारे सभी व्यूअर्स से। साथ ही आज का जो हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशनल लेंसिंग, उसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को थोड़ी जानकारी प्रदान करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद सिमरन जी। जैसा कि मेरी साथी डॉक्टर सिमरन ने बताया कि ये प्रोग्राम पिछले वर्ष से शुरू हुआ है। ये आज का हमारा 33वां सेशन है, और आज हमारे साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली से प्रोफेसर जसजीत सिंह बागला जुड़ रहे हैं। बहुत जाने माने शिक्षक हैं, बहुत अच्छे शिक्षक हैं, हम सब लोग उनके मुरीद हैं। मैं उनसे आपका तारुफ कराऊंगा। उससे पहले ज़रा मैं आपको इस सीरीज़ के बारे में एक बात पुनः बता दूं थोड़ा सा, कि ये सीरीज़ स्कूल एजुकेशन से जुड़े हुए मुद्दे जो कि आज के सामयिक हैं, और उनके बारे में हमारे व्यूअर्स को मुलाकात कराने, परिचित कराने के लिए आयोजित की जाती रही है। हमने विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान और गणित के क्षेत्रों से जुड़े हुए विषयों पर इसमें चर्चा की है। इस सब की पूरी लिस्ट हमारे एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी, आप जरूर देखें। साथ साथ इसकी पूरा विवरण, इस सीरीज़ का पूरा विवरण आपको ncert.nic.in, जो कि हमारी एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके इवेंट सेक्शन में भी आपको इन सब विषयों पर चर्चा होती हुई दिखेगी। आपको सारे सेशंस वहाँ पर मिल सकते हैं। तो आज मेरे साथी हैं डॉक्टर जसजीत सिंह बागला। ही इज़ अ प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल साइंसेज एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च एट मोहाली, एंड ही वॉज बोर्न इन आगरा। मोस्ट ऑफ हिज एजुकेशन टुक प्लेस इन दिल्ली with Delhi University. He completed his doctoral program for the Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics, Pune, which is popularly called IUCA. At IUCA, Dr. Bagla worked with Professor T. Padmanabhan. Dr. Bagla pursued his postdoctoral work at the Cambridge, England, for 2 years and at the Harvard, USA.
for a year before taking up a regular position at the Harish Chandra Research Institute, popularly called HRI, Allahabad, now Prayagraj. After working at HRI for more than 10 years, Dr. Bagla joined IISER Mohali in 2010 as a professor. His research interests are in the area of cosmology and astrophysics. His key contributions are in the areas of cosmological and body simulations, structure formulation in the universe, dark energy, estimation of cosmological parameters, gravitational lensing, about which he is going to talk to us today, and galaxy formation. Professor Bagla has also equally been interested in the process of learning and science education. Professor Bagla's association with NCERT goes back to 2014 when he delivered talks during our national science exhibitions at Chandigarh. As far as today's talk is concerned, Dr. Bagla आज बात करेंगे हम लोगों से साथ न्यूटन्स लॉ के ग्रेविटेशन के साथ जोड़ते हुए कि किस तरह से लाइट पर भी ग्रेविटेशन का असर पड़ता है, क्या लाइट के जो पार्टिकल्स है फोटॉन्स वो भी ग्रेविटी के अंदर थोड़े से बेंड होते हैं, और उसके साथ लेंसिंग और उसका फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सी के साथ किस तरह से संबंध है, इन सब बातों पर आज गहनता से चर्चा करेंगे। साथियों, आप अपने सवाल हमें भेजते रहिए, आपका स्वागत है। और प्रोफेसर बागला, द स्टेज इज योर्स, इट इज ऑल योर्स नाउ, प्लीज, आपका स्वागत है। थैंक यू Galan ji, thank you Simran for the kind welcome and introduction. I will be talking about gravitational lensing. So let me try to set the stage. Now, after Newton came up with his theory of gravitation, people started wondering that, you know, every object we know of falls under gravity. If I throw something up, it falls back on the ground. जब हम खेलते हैं, फुटबॉल खेलें, क्रिकेट खेलें, कुछ भी खेलें, बॉल को ऊपर फेंके तो वो नीचे गिर जाती है। जो फास्टेस्ट बॉलर हैं, आप लोग शायद IPL देख रहे होंगे, इसमें फास्टेस्ट बॉल शायद 156 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से फेंकी गई थी, और जो फास्टेस्ट रिकॉर्डेड है वो 160 किलोमीटर पर आवर है। अब इसको कन्वर्ट करें तो ये आता है 44 मीटर पर सेकेंड, तो इस स्पीड से फेंकी जाती है। और आप जानते हैं कि इस स्पीड से बॉल फेंकी जाए, ठीक से फेंकी जाए तो बहुत दूर जाके गिरती है। जब फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहे होते हैं तो विकेट कीपर और स्लिप फील्डर्स हैं वो काफी पीछे हट के खड़े होते हैं, क्योंकि बॉल एक तो तेजी से आती है और हवा में बहुत देर तक रहती है, बहुत दूर तक रहती है। अगर हम कोई चीज बहुत ही तेज फेंके तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल सकती है, सो इट कैन एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, एंड दिस इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। और पृथ्वी के लिए एस्केप वेलोसिटी जो है, अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी, दैट इज 11.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड। So you can see that it is about 250 times faster than the fastest cricket ball which has been bowled. That is why cricket ball does not escape the earth; it remains on the ground. But we also know that the fastest thing which is there is light, and speed of light is 3 lakh kilometers per second, which of course is much larger than the escape velocity. So if I shine light, if I shine a laser pointer in some direction, pointing up, that light will escape. It is not going to remain bound to earth. But what scientists wanted to know and wanted to ask was, do light rays bend under gravity? And this question was first asked more than 200 years ago, and it was asked in the context, can we detect this effect due to Earth's gravity? तो अगर पृथ्वी पे हम मान लीजिए 2 पहाड़ियों की चोटी पे खड़े हों, एक चोटी से दूसरी चोटी की तरफ लाइट फेंकें, तो क्या लाइट रे की डायरेक्शन इतनी बदलेगी कि हम उसको नाप पाए? तो थ्योरेटिकल एस्टिमेशन जो है वो एक जर्मन साइंटिस्ट थे, George von Soldner, and he calculated the deflection of light by a gravitational mass. ये उन्होंने 1801 में किया था. Then he published it in 1804. Translation of his paper, very small paper, is available over. So what he found is that yes, there is a deflection,
but the deflection is small. If I have a mass m and the closest distance to the mass is b, तो अगर हम पृथ्वी की सतह पे ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो radius of Earth will be equal to b, and c is the speed of light, and g is Newton's constant of gravitation. So he found this formula, and when he plugged in the numbers, he found that the deflection for Earth was very small, too small to be measured. Now, how small was it? If I take a 1 rupee coin and if I put it on the surface of moon, you can imagine how tiny it will look. वो कितना छोटा रहेगा. लगभग उतने एंगल से पृथ्वी की ग्रेविटेशन में, गुरुत्वाकर्षण से लाइट रे डिफ्लेक्ट हो. So he realized that it is too small to measure, and he left it at that. He also calculated the angle if there is a light ray which is just grazing the sun. So if I have the sun and if I have a starlight which is coming very, very close to the sun, and he found the angle to be less than 1 arc seconds, 0.84 arc seconds, or 0.00023 degrees. So we know that 1 degree is itself a very small angle. If I ask a child to draw an angle of 1 degree, they will struggle because the two lines will merge into each other when I draw with a pencil. So this is much, much smaller than a degree. He left it at that. He did not worry whether it can be measured or not, because one issue was, how do I look at a star very close to the sun? The other reason why no one followed it up for almost 100 years was that around the same time, people did experiments to show that light is not a particle, but it is made up of waves. It has wave properties. So Young's double slit experiment was done, and he showed that because of interference, light behaves more like waves. Before that, people used to follow Newton's theory, which was the corpuscular theory, where he said that light is made up of particles. So no one knew what will happen if I have a wave interacting with gravity. So no one basically followed up on Soldner's calculation. For almost 100 years, close to 1900, Planck came up with the idea that light is actually made up of photons. And of course, the combination of wave and particle nature then led to quantum mechanics. But once the idea of photon came up, the whole estimation of effect of gravity on photons became in fashion, and Einstein repeated the calculation. He repeated it with a slightly different method in 1911 using what is called the equivalence principle. Equivalence principle basically says that all masses fall at the same rate. So this is like Galileo is said to have done this experiment where he took one very heavy mass and one very light mass, and he dropped both of them from the leaning tower of Pisa, and they both fell at the same time. So what it means is that the rate of falling is independent of the mass of the object. What Einstein said was to let us take it one step further. He said that if I am in a room with no windows, no doors, I cannot look outside, and if this room is on the surface of Earth, then I will feel an acceleration due to gravity. But there is no way of differentiating this situation from a tiny room which is placed on top of a rocket, and rocket is accelerating exactly with the same acceleration as acceleration due to gravity. So he said, I cannot do any experiment which can differentiate between these two situations. Therefore, if I am in a small room attached to a rocket, and if I have a light ray passing through that, because I am accelerating, the light ray's path will bend. And then he went back and calculated how much will be the bending on Earth because of gravity. And of course, he repeated for the sun as well. So once he did this calculation, he felt that maybe it can be measured during a total solar eclipse when moon covers the light of the sun, and we can actually see stars for a few moments. Those moments can be from a few seconds to a few minutes. So he started writing to astronomers, visiting astronomy observatories and trying to persuade them to attempt this observation. So as far as we know, no one was trying it,
but there was a 1912 expedition in Brazil, which was sent from Argentina, but unfortunately they could not take any photographs because there was clouds, storm, and rainy weather. There were many expeditions which were trying to make the measurement in 1914, but the eclipse was visible in Crimea, which has been in the news for wrong reasons because of this war between Russia and Ukraine. So expeditions went there to observe the eclipse, but while they were going there, the First World War started, and they were not permitted to make any observations. Russia at that stage was allied with England. America had not yet joined the war, and it was also aligned with France. So French and British astronomers were allowed to go back. Their equipment was not allowed because every ship wanted to carry supplies. So they said that you leave your telescopes behind, we will keep them here, but you can go. German astronomers, who were at that stage for Russia, they were an enemy country, they were arrested and kept as prisoners of war. Anyhow, in some sense, it is nice that there was no observation in 1914, because if there had been an observation and if they had not matched Einstein's first calculation or Soldner's calculation, there would have been difficulty. Einstein himself revisited the calculation after completing general theory of relativity in 1915, and he found that when in his new theory, the answer was larger by a factor of 2. So earlier it was 0.84 seconds, arc seconds, but now it was 1.68 or almost 1.7 arc seconds. Now 1915 was in the middle of the First World War, and being enemy countries, there was no poster, even post was not permitted between England and Germany. But Arthur Eddington, who was at that stage in Cambridge observatories, he learnt about Einstein's theory through friends in Netherlands. Netherlands was a neutral country, so they could correspond with people in Germany as well as England. And Eddington learnt about this theory, he read Einstein's papers, and he wrote many explanations of Einstein's theory for astronomers in England. And he and the then Royal Astronomer Dyson, they realized that the total solar eclipse, which will happen on May 29, 1919, is particularly suitable for making the measurement. This was for two reasons. The May 29, 1919 eclipse was to be a very long one, almost 6 minutes of totality, which means you can take many pictures. The other reason was that it was happening when the sun was in the direction of Taurus constellation, which has a large group of stars called Hyades. And this group of stars, because there are many bright stars there, Dyson and Eddington felt that if they can make the measurement, they will have so many stars to check the angle of bending that their errors will be in control. So already in 1916-17, they started planning to have expeditions to make observations in the solar eclipse of 1919. Both had worked on the earliest measurements of parallaxes of stars. This was started once astronomers figured out how to take pictures of stars through a telescope. So telescope se picture leke, if you take a picture of a region every few months, then because of motion of Earth, the position of stars shifts by a very small amount. And Dyson and Eddington had worked out ways of making the measurements and doing the calculations. The calculations are very hard because if you have 40 or 50 stars in one plate, normally you have many more, then you have to make measurements of every pair, distance between every pair of stars, and then you have to do calculations. But what Dyson and Eddington did was to come up with an approximate scheme to simplify the calculation. So they were familiar with doing such measurements, and they were familiar with making small measurements, small changes, measurements of small changes in
पोजिशंस ऑफ स्टार्स। तो स्टार की पोजीशन थोड़ी सी भी अगर शिफ्ट हो तो इनको वो मेजर करने का तरीका आता था। So they had a lot of difficulty because war ended only in 1918. 1918 में पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ और लोग नहीं थे। पहले विश्व युद्ध में बहुत लोग मर गए थे, तो क्वालिफाइड टेक्नीशियंस वगैरह नहीं थे, लेकिन इन लोगों ने 2 एक्सपीडिशन तैयार किए और माउंट किए। एक एक्सपीडिशन ब्राजील में गया। इट वेंट टू अ प्लेस कॉल्ड सोब्राल इन ब्राजील, वेयर दे सेट अप their telescopes next to a race course. The second expedition was sent to a small island off the western coast of Africa called Principe. Now it turns out that sending it to Principe was a little bit of a mistake, because when they had planned the expedition, they had asked for weather reports from the last few years, and they got incorrect reports that weather in Principe is very clear in May, whereas in May they normally get a lot of rain. Sobral was supposed to be clear and it was okay. They thought of 2 other locations, but they were not able to mount 4 expeditions, and they also felt that in one of the locations, which is next to a lake in Tanzania, they thought the sun will be very low and there will be other effects which will complicate matters. So here you can see 2 telescopes, one round telescope and one square kind of a tube, and the telescopes are fixed, but what we have in front are small mirrors. The design was such that the sunlight will fall on these mirrors and mirrors will reflect the light into the telescope. So the orientation of mirrors has to be changed as the sun rises and sets, and they had set up a mechanism so that they could the mirror could follow the sun for up to 20 minutes at a time, which was enough because eclipse was going to be there only for 6 minutes. So the camera was inside the shed. When they made the measurements, the results were published in a paper in Philosophical Transactions of the Royal Society of London. It is a very nice paper, so anyone who is an educator or wants to know about history of science, if you can get hold of this paper, read it, because it not only talks about the science which they did, but it also gives very detailed information about how they planned the different expeditions, how these expeditions were carried out, what kind of difficulties they faced. For example, Eddington was originally expected to remain in Principe for 6 months, but he in the end ended up leaving very early after the eclipse, because there was going to be a strike of shipping agencies. So if he had stayed, he could have just remained stuck over there. So there are interesting details of this kind which are available there. It is also interesting to note that going on the expedition was thought to be a punishment for Eddington, because he did not participate in the war effort. So people wanted him to be sent to the war front, and Dyson, who was the royal astronomer and hence had access to higher officials like Prime Minister and so on, he persuaded them that although he is not being sent to the war, he is being sent to a very difficult place in Africa, and that in itself is a punishment. What they found when they analyzed the result was kind of mixed. They had taken 2 telescopes to Sobral because one person who had managed to observe the eclipse in 1914, not from Crimea, but from Scandinavia, he had said that the larger telescope had shown some problem during the eclipse. So take the smaller one along. And sure enough, the same problem happened in the 1919 eclipse. What happens during the eclipse is that moon comes in front of the sun. So sunlight is shielded and temperature drops very suddenly. And later on it was realized that what happened when temperature dropped was that the focus of the larger telescope shifted and the images were fuzzy. Anyhow, the images from smaller telescope at Sobral were of very good quality. In Principe, they had a thunderstorm which cleared only for a few minutes
around the eclipse, so they were able to take pictures, but again there was some difficulty. But what they found was that if they trust the small telescope at Sobral, where the pictures were of best quality, then the results were consistent with Einstein's prediction. So this graph is from that paper. On the x-axis is plotted the distance from the center of the sun for a star. It is inverted, so stars which are on the right-hand side in this graph, they are closer to the sun. Stars which are on the left-hand side are far away. And of course, deflection is more for stars which are closer to the sun. The scale is not linear, which is why this relation can be plotted as a straight line. Einstein's prediction is the thin line on top. Soldner's prediction is the dashed line at the bottom. And the Einstein's prediction is the solid line, which is diagonal, thick line. And Soldner's prediction is the dashed line at the bottom. The best fit result is the thin line on top, which is close to Einstein's line. Much later, in 1970s, when they reanalyzed the same data using computers and not using the simplified techniques which Dyson and Eddington were using, they found that even from the main telescope at Sobral, the results are completely consistent with Einstein's theory. तो ये बहुत बड़ी achievement थी डाइसन, एडिंगटन, डेविडसन और उनके जो हेल्पर थे उनके लिए, और इससे आइंस्टाइन बहुत फेमस हो गए. ओवरनाइट आइंस्टाइन सेलिब्रिटी बन गए, क्योंकि एक जर्मन साइंटिस्ट की थ्योरी ब्रिटिश साइंटिस्ट ने कंफर्म की, और ये सारा काम उस समय हो रहा था जब ये दोनों देश आपस में लड़ रहे थे. So that also gave a signal of hope, and in fact scientists came together. The International Astronomical Union was founded in 1919, and this eclipse measurements and these discussions played a very important role in that. Einstein famous हो गए, general theory of relativity became the accepted theory of gravitation, unseating Newtonian theory, and scientists of course started working on implications of this theory. So how does gravitational lensing work? It works because we have some regions in space where there are a large number of galaxies or a large amount of mass which is together. So then if I'm looking at something which is behind this, light from the source behind gets bent. And when it gets bent, many things can happen. I can actually end up getting a distorted image, or I can end up getting multiple images. And I think it is nice to look at this with an analogy of bending of light in water through refraction. तो अगर आप ये फोटो देखें, ये एक स्विमिंग पूल की फोटो है, और स्विमिंग पूल के बॉटम पे स्क्वायर टाइल्स हैं, ओके? लेकिन क्योंकि स्विमिंग पूल के पानी की सतह जो है वो समतल नहीं होती है, लोग तैर रहे होते हैं तो उसमें वेव्स होती हैं, फ्लक्चुएशंस होती हैं, पानी की सतह ऊपर नीचे होती है, उससे लाइट बेंडिंग होके जो बॉटम है, जो नीचे का तल है पूल का, उसमें हमें स्क्वायर ग्रिड नहीं दिखती है. अगर आप यहाँ पे देखें तो वो स्क्वायर ग्रिड जो हैं वो बहुत डिस्टॉर्ट हो चुकी हैं कई जगह पे. कुछ जगह पे थोड़ी सी डिस्टॉर्शन है, कुछ जगह पे बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन है, और अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ चीजें हैं जिनकी मल्टीपल इमेज है. जैसे आप लेफ्ट कॉर्नर में जाएं मिडिल में, तो यहाँ पे अंदर एक गाढ़े नीले रंग का गोला बना हुआ है स्क्वायर टाइल्स के साथ, लेकिन उस गोले की एक इमेज तो है, उसके साथ में उसके राइट अपर राइट पे एक और इमेज दिख रही है. तो हमें कई इमेजेस दिख जाती हैं, कई बार नहीं दिखती हैं, एक ही इमेज दिखती है, लेकिन कभी कभी मल्टीपल इमेजेस दिख जाती हैं. और दूसरी बात यह है कि अगर ऐसा होना है कि मल्टीपल इमेजेस होनी है, इसका मतलब है कि हमारे से लेकर सोर्स तक अगर हम लाइट का पाथ ट्रेस करें, लाइट रे का पाथ ट्रेस करें, तो कई रास्ते हैं. इसका मतलब है कि जो मैपिंग है हम यहाँ पे इमेज प्लेन में या स्काई में देख रहे हैं और सोर्स प्लेन में है, लाइट रेज का पाथ आपस में भिड़ जाता है, मिल जाता है. इसको सिंगुलैरिटी कहते हैं, और इसको मैथमेटिकली स्टडी करना थोड़ा मुश्किल होता है.
अगर एक्चुअल सिमेट्रिक चीज हो, सिमेट्रिक सिचुएशन हो कि एक ही पॉइंट मास है, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसके पीछे सीधा उसी लाइन में ही कोई सोर्स है, तो हमें हर तरफ से एक गोलाकार शेप की इमेज दिखेगी। इसको आइंस्टाइन रिंग कहते हैं। परफेक्ट रिंग तो नहीं दिखता है क्योंकि कोई भी चीज परफेक्टली सिमेट्रिकल नहीं है इस दुनिया में, लेकिन ये देखिए यहां पे एक ऑलमोस्ट कंप्लीट रिंग की पिक्चर है। तो दिस इज, ये हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ली गई पिक्चर है, और जो लेंसिंग गैलेक्सी है उसका कोड नेम जो है लुमिनस रेड गैलेक्सी, वो ऊपर दिया है। अगर हम कोई भी मास लें और कहें कि, और कोई भी सोर्स रीजन लें, तो अगर हम ये कहें कि जहां जहां पे फोकसिंग हो रही है, जहां जहां पे मल्टीपल लाइट रेज एक ही जगह जा रही हैं, उसका मैप अगर हम स्काई में बनाएं तो उसको बोलते हैं क्रिटिकल कर्व, जो कि लेफ्ट पे दिखाया है। और अगर उसी को सोर्स प्लेन में डाल दें तो थोड़ी डायमंड शेप यहां दिख रही है, वैसा बन जाता है। लेकिन लेंसिंग में दिखता क्या है, चलिए ये एनिमेशन देखते हैं। ये मेरे एक पीएचडी स्टूडेंट ने बनाई थी, आशीष मीणा। उन्होंने क्या किया कि एक कंप्यूटर मॉडल बनाया लेंस का, और एक मॉडल गैलेक्सी ली जो कि हम शिफ्ट करते गए और देखते गए कि किस तरह की इमेज बनेगी। देखिए कि कितना सुंदर रिंग शेप इमेज बन रही है। एक ही गैलेक्सी की 5 इमेज हैं। इमेज जैसे जैसे गैलेक्सी लेंस के पीछे हिलती है, या तो नई इमेज बनती हैं या इमेज जो है वो गायब हो जाती है। सो आई कैन हैव क्रिएशन ऑफ पेयर ऑफ इमेजेस और एनहाइलेशन ऑफ पेयर ऑफ इमेजेस। जैसे ये ग्रीन लाइन टच करेगी, इधर 2 गैलेक्सी इमेज बनेगी, और अब रेड लाइन टच करेगी तो रेड लाइन के आसपास राइट में 2 इमेज बनेगी। जब ये रेड डायमंड के बाहर निकलेगी तो 2 इमेज जो हैं वो गायब हो जाएंगी, एनहाइलेट हो जाएंगी। और जब ये ग्रीन लाइन क्रॉस करेगी तो 2 ग्रीन इमेज जो हैं वो एनहाइलेट हो जाएंगी। तो ये एक सैंपल है कि अगर एक ही सिंगल गैलेक्सी लेंस हो या क्लस्टर लेंस हो सिंपल सा, उसमें किस तरह की इमेज दिख सकती है। आशीष मीणा ने अपनी पीएचडी में जो काम किया वो देखना चाहते थे कि क्या कोई और खास तरह की इमेज बन सकती है। लेकिन उस पे जाने से पहले हम ये देखते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इन लाइन पे होता है सोर्स प्लेन में, तो उसका क्या होता है। मैंने कहा था कि जब फोकसिंग हो रही है तो मैग्निफिकेशन इंफिनिटी हो जाती है, लेकिन वो तो एक लाइन पे है। कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, चाहे एक स्टार हो, उसका एक फाइनाइट साइज है, तो नेट मैग्निफिकेशन इंफिनिटी कभी नहीं होगी, फाइनाइट रहेगी। लेकिन अगर कोई छोटा ऑब्जेक्ट हो, ये तो पूरी गैलेक्सी है, अगर कोई छोटा ऑब्जेक्ट हो तो उसकी मैग्निफिकेशन बहुत ज्यादा हो सकती है। कुछ समय पहले एक सिंगल स्टार जो कि आज से करीब करीब 12 बिलियन यानी कि 12 खरब साल पहले था, उस एक स्टार की इमेज जो है वो यहां पे देखी गई है। स्टार यहां पे है और इसकी कई इमेज जो हैं वो दिख रही है। आप ये सोचिए कि ये इतना दूर है कि वहां से लाइट आने में 12 खरब साल लगते हैं, लेकिन उसको इस कारण से देख पाए क्योंकि उसकी मैग्निफिकेशन, ग्रेविटेशनल लेंसिंग की मैग्निफिकेशन के कारण उसकी लाइट बहुत ब्राइट होगी, इतनी ब्राइट होगी कि हम उसको देख पाए। आशीष मीणा का काम था कि वो ये देखें कि कोई खास तरह की इमेज फॉर्मेशन बनती हैं जो लोगों ने पहले ध्यान से स्टडी नहीं की। उन्होंने एक ऐसी इमेज फॉर्मेशन पाई जिसमें रिंग बनता है, लेकिन वो लेंस के चारों तरफ नहीं बनता है, उसके एक तरफ बनता है। इस तरह की इमेज एक फॉर्मेशन एक देखी जा चुकी है, और कुछ लोगों का कहना था कि बस एक ही दिखेगी। तो हम जानना चाहते थे कि क्या वो कैलकुलेशन ठीक है कि नहीं है।
आशीष ने एक और इंटरेस्टिंग तरह का इमेज फॉर्मेशन स्टडी किया जिसमें ट्रायंगुलर शेप्ड इमेजेस बनती है। लेकिन ऐसी इमेज फॉर्मेशन कभी नहीं देखी गई है। और तरह की फॉर्मेशन जैसे कि ये ऑलमोस्ट बार शेप है, ये देखी गई है। तो आशीष और हमने मिलके ये कैलकुलेट किया कि इस तरह की इमेज कितनी दिखेंगी, और उसमें काफी कंप्यूटर सिमुलेशन की गई, और हमने पाया कि जो पहले का एस्टिमेट था वो बहुत कम था, और आगे जो ऑब्जर्वेशन होने वाली हैं उसमें हमें ढेर सारी ऐसी इमेज फॉर्मेशन दिखनी चाहिए। खैर ये तो मैं आपको रिसर्च वर्क में ले गया। और बताएं, ये जो है ये ऑब्जर्वेशन 2011 की है। कुछ टेलीस्कोप हैं जो कि दूर के सितारों को ऑब्जर्व करते रहते हैं, देखते रहते हैं लगातार। उनमें से एक स्टार के आसपास उन्होंने पाया कि अचानक उसकी ब्राइटनेस बढ़ी और फिर कम हो गई। जो ऊपर वाला प्लॉट है वो लगभग 300 दिन का प्लॉट है, जो नीचे वाला है वो सिर्फ 7-8 दिन का प्लॉट है। अब इस तरह से ब्राइटनेस बढ़ना और कम होना इस कारण हो सकता है कि उसके हमारे बीच में कोई मास आ गया और उसके कारण ग्रेविटेशनल लेंसिंग से इसकी लाइट मैग्नीफाई हो गई। तो लोगों ने इसको बाद में काफी स्टडी किया। अब उनका मानना है कि शायद ये एक ब्लैक होल है जो कि बीच में से गुजरी थी। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है जो कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग से की जा सकती है। और हाल ही में एक स्टार के अराउंड एक प्लैनेट की डिस्कवरी हुई, क्योंकि प्लैनेट के कारण ग्रेविटेशनल लेंसिंग हुई एक बैकग्राउंड स्टार की। और ये अभी तक हमने जो बात की वो तो वीक ग्रेविटेशनल फील्ड की लेंसिंग की बात की, जबकि डिफ्लेक्शन बहुत मास के काफी दूर दूर से होता है। अगर हम कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड ले तो उसमें क्या होगा? ये जो ग्राफ लगे हुए हैं नीचे बॉटम राइट से शुरू करें, ये हैं अगर कोई लाइट रे ब्लैक होल के पास से गुजरती है तो उसका क्या होता है। तो ये जो ग्राफ है इसमें मैं लाइट रे को ब्लैक होल के पास 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 लाता गया हूं, और जैसे जैसे लाइट रे ब्लैक होल के पास आती है तो डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। आप जो बॉटम लेफ्ट वाला प्लॉट देखेंगे इसमें तो लाइट जो है वो ब्लैक होल का चक्कर लगा के फिर आती है, और भी पास लाएं तो 1.5 चक्कर, या और भी पास लाएं तो 2 चक्कर लगा के आती है। लेकिन इन सब से हम क्या समझ सकते हैं? इन सब से एक चीज जो हम सीख सकते हैं कि ब्लैक होल के आसपास कुछ भी हो, हमें जब ब्लैक होल की तरफ से लाइट आएगी तो इस डिफ्लेक्शन के कारण ब्लैक होल के डायरेक्शन में एक छेद सा दिखेगा, अंधेरा छेद दिखेगा जहां से कोई लाइट नहीं आएगी। और ये जो है कुछ साल पहले इवेंट होराइजन टेलीस्कोप नाम का है, उन्होंने ऑब्जर्व किया एक पड़ोस की गैलेक्सी है उसके केंद्र से, जहां की एक कुछ अरब सूर्य से कुछ अरब गुना ज्यादा मास की ब्लैक होल है, उसके आसपास उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन की। और हाल ही में उन्होंने ऐसा ही एक चित्र जो हमारी गैलेक्सी है उसके केंद्र में जो ब्लैक होल है उसके बारे में उसका चित्र भी रिलीज किया। तो ये ग्रेविटेशनल लेंसिंग का अलग रूप है जिसमें लेंसिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। इससे पहले हम जो बात कर रहे थे वो काफी वीक ग्रेविटेशनल लेंसिंग की बात कर रहे थे। शुरू में मैंने ये भी कहा कि लाइट की पार्टिकल थ्योरी थी और फिर वेव थ्योरी थी और उसके बाद अब डुअल थ्योरी है। तो लोग ये भी सोचने लगे कि क्या हम लाइट की वेव एस्पेक्ट को लेंसिंग में देख सकते हैं, लेकिन उसका आंसर आया कि नहीं, वो नहीं देख सकते, क्योंकि लाइट की वेवलेंथ, जो लाइट हम ऑब्जर्व करते हैं, वो बहुत छोटी है। तो लेकिन हाल ही में करीब करीब 7 साल पहले लोगों ने ग्रेविटेशनल वेव्स की डिस्कवरी की, ऑब्जर्वेशन की, और ग्रेविटेशनल वेव्स की जो वेवलेंथ होती है बहुत बड़ी होती है। जो हम ऑब्जर्व कर पाते हैं उनकी वेवलेंथ बहुत बड़ी होती है। तो फिर हमने कुछ साल पहले सवाल पूछा कि क्या ग्रेविटेशनल वेव्स की लेंसिंग में वेव इफेक्ट देख सकते हैं। तो हमने पाया कि हाँ, अगर लेंस का मास जो है
वो सूर्य के मास से कुछ ज्यादा हो तो वहां पे हम ये देख पाएंगे। और आशीष मीणा ने ये कुछ काम शुरू किया था करीब करीब 2 साल 3 साल पहले, और उन्होंने ये दिखाया था कि वेव इफेक्ट्स जो हैं वो ग्रेविटेशनल वेव्स का जो पैटर्न है उसको एकदम बदल देते हैं। तो जो सबसे ऊपर इमेज है लेफ्ट पे वो बिना लेंसिंग की है, और जो नीचे लेफ्ट पे इमेज है वो वेव इफेक्ट्स के साथ। खैर वो तो डिटेल्स हैं। और हमारे एक और स्टूडेंट हैं राहुल रमेश, जिन्होंने हमारे यहाँ मास्टर्स की थी, उन्होंने लेंसिंग ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स फ्रॉम सुपरनोवा पे काम किया और दिखाया कि हालांकि सुपरनोवा से आने वाली वेव्स का कोई खास पैटर्न नहीं होता है, लेकिन उन्होंने एक ऐसा तरीका ढूंढा कि हम वहां पे भी लेंसिंग का पता लगा सकते हैं। ये लोग हैं जिनके साथ मैंने कुछ काम किया है। आशीष कुमार मीणा हमारे साथ थे, अब इजराइल में काम कर रहे हैं। राहुल रमेश हमारे यहाँ एमएससी किए हैं और अब वो हाइडेलबर्ग जर्मनी में पीएचडी कर रहे हैं। और कुछ लोग आयुका पुणे में हैं जिनके साथ हम और फॉलोअप काम कर रहे हैं। सो आई विल स्टॉप हियर एंड टेक क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir, for apprising in depth to our viewers about gravitational lensing. We have a few questions over here, if you allow us. Please. Sir, in the first place, I would like to know what are the applications of gravitational lensing in astronomy? Like, what could be the possible areas that astronomers could uncover with the help of gravitational lensing? जी, तो इसमें मैं इस प्लॉट पे जाता हूँ। जैसे हमने पहले फॉर्मूले में देखा था कि जो बेंडिंग एंगल है वो दो चीज पे डिपेंड करता है कि मास कितना है और दूरी कितनी है। तो अगर हम ग्रेविटेशनल लेंसिंग की ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हम कितना मास है वो पता लगा सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ इस पिक्चर में दिखाया गया है कि एक क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज है की बेंडिंग हो रही है। तो अगर हम क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज को देखें तो उसमें हमें जितना मास दिखता है लेंसिंग के लिए उससे कहीं ज्यादा चाहिए। इससे डार्क मैटर का पता लगता है, कितना डार्क मैटर है वो पता लगता है। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया लेंसिंग के थ्रू एक प्लैनेट की डिस्कवरी हो पाई एक स्टार के आसपास, क्योंकि उन्होंने एक बैकग्राउंड स्टार की लाइट मैग्नीफाई कर दी। या एक ब्लैक होल जिसको हम देख भी नहीं सकते, वो वैसे ही हमारी आकाश में घूम रही है और वो एक स्टार के आगे आई, उस स्टार की लाइट मैग्नीफाई हुई तो हमें पता लग गया कि यहाँ पे ब्लैक होल है। इस तरह की चीजें हम पता लगा सकते हैं। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हम गैलेक्सीज और क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज का मास पता लगा सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि उनमें कितना डार्क मैटर है। डार्क मैटर जो है उससे अलग तरह का है, इससे इंटरैक्ट नहीं करता है, सिर्फ के थ्रू इंटरैक्ट करता है। तो इसलिए उसका पता लगाना जरूरी है। कई लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट भी चल रहे हैं वो जो पता लगाएं कि ये डार्क मैटर है क्या, लेकिन ये इंफॉर्मेशन कि डार्क मैटर है और कितना है ये हमें ग्रेविटेशनल लेंस। थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग दैट सर। एक और सवाल है सर हमारे पास, जब हम ग्रेविटेशनल लेंसिंग के पूरे फिनोमिना को समझते और पढ़ते हैं, सो इज दिस डेफिनेशन राइट और मे बी द स्टेटमेंट आई कुड से, इज इट राइट दैट लाइट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी? कुड वी से दैट? Yes, we can say that the path of light is affected by gravitational force. Okay, so we have to divert it a bit. Sir, you may ask the question. Great, Professor Bagla. It was indeed nice listening to you, and your session has opened a Pandora box of questions for me, for our viewers. There are some questions which are very interesting to listen. आपने शुरू में जब शुरू किया कि सब अर्थ से लाइट एस्केप हो जाती है, उसकी जो स्पीड है वो प्लैनेट की एस्केप स्पीड से ज़्यादा है, ये हमने अच्छी तरह से समझा। तो ये लाइट जाती कहाँ है? क्या वो इट इज़ एवर इमॉर्टल और वो आगे चलती चली जाती है, और क्या उससे हमें कोई सिग्नल वापस मिलता है सो दैट कि हमें इस पूरी गैलेक्सीज के जो सिस्टम है उसकी लेंथ का या उसकी डायमेंशंस का कुछ अंदाजा लग सके? जी, सो लाइट तो चलती जाती है,
लेंसिंग का जो मैंने दिखाया, अगर ब्लैक होल से लेंसिंग की बात नहीं करें, ब्लैक होल के बहुत नजदीक जाने की, तो लाइट रे का पाथ थोड़ा सा बदलता है, ज्यादा नहीं बदलता है। और इन मेजरमेंट से, जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल ठीक है कि हम सिर्फ मास ही नहीं, गैलेक्सी के साइज का भी अंदाजा इन चीजों से लगा सकते हैं। लाइट जो है वो क्योंकि इतना फास्ट मूव करती है, ग्रेविटेशन का इफेक्ट उस पर बहुत कम होता है, अनलेस वो ब्लैक होल के बहुत नजदीक हो। बहुत नजदीक हो तब तो चक्कर लगा लेती है लाइट इसके। आप डॉक्टर साहब आपकी स्लाइड नंबर 2 जरा देख सकता हूं मैं, जहां आपने बेंडिंग का एक फॉर्मूला उसमें डिवाइस किया है, that is phi is equal to 2gm by bc square. Yes, the terms are self-explanatory. This m is probably the mass of the heavenly object, if it is Earth. Now, if this bending depends on the wavelength of the radiation also, because see the light is having ranges of frequencies, but this formula doesn't have any parameter like the mass or the energy of the particle. Does it depend on the energy also, or it's same for all? That is because of equivalence principle, जैसा मैंने बताया कि सब masses same rate पे गिरते हैं, तो वो mass जो है वो इस equation से निकल जाता है। Okay. ये न्यूटोनियन इक्वेशन है। हाँ, इसको अगर हम रिलेटिविटी में कैलकुलेट करें तो ये 2 की जगह 4 हो जाता है। ओके, हाँ, तब 2 का फैक्टर एक और आ जाएगा। यस। कुछ और सवाल है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल एक बच्चे ने पूछा है अभी कि साहब आप गैलेक्सी का फोटो दिखा रहे हैं और आप तो खुद गैलेक्सी के अंदर हैं, तो किसी जिस ऑब्जेक्ट के अंदर आप हैं, आप उस ऑब्जेक्ट का पूरा फोटो कैसे ले सकते हैं? थोड़ा सा। नहीं, हम अपनी गैलेक्सी देखेंगे तो वो उस तरह नहीं दिखेगी, लेकिन हमारे आसपास बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, अरबों गैलेक्सीज हैं, तो हम बाकी गैलेक्सीज को देख सकते हैं। तो ये अपनी गैलेक्सी का स्ट्रक्चर देखने के लिए हमें बहुत ज्यादा डिटेल स्टडी करनी पड़ती है, जो कि लोगों ने की है। तो उससे हमें पता है कि हमारी गैलेक्सी स्पाइरल गैलेक्सी है, हमारी गैलेक्सी के सेंटर पे एक अंडाकार बल्ज है, जो कि उसका एक तरफ का साइज इतना है तो दूसरी तरफ का साइज से 3 गुना है, और हम जो हैं वो सेंटर से बहुत दूर हैं। तो सूर्य जो है वो सेंटर के नजदीक बिल्कुल नहीं है, जो कि एक मायने में अच्छी बात है, क्योंकि हर गैलेक्सी के सेंटर पे बहुत बड़ी ब्लैक होल होती है, तो दूर रहना ही अच्छा है। यस, गैलेक्टिक सेंटर से आपने बताया। तो जो ऑब्जर्वेटरी से जो हम तस्वीरें देखते हैं गैलेक्सीज की, जो मिल्की वे की तस्वीर देखते हैं, जिसके बारे में कि आपने अभी उल्लेख किया कि सर्पलाकार है, छोटा मतलब एलिप्स है, और उसके एक एक्सिस बहुत छोटा है दूसरे एक्सिस के मुकाबले, तो ये फोटो जो हमें आसमान में दिखती है वो क्या, वो तो आपने जिससे बताया कि जो दूसरी गैलेक्सी की होनी चाहिए। हम क्योंकि अपनी गैलेक्सी के अंदर है, तो हमें अपनी गैलेक्सी तो एक, जैसे आकाशगंगा रात को अगर अंधेरी जगह चले जाएं तो एक बैंड की तरह दिखती है, पार्शियल। ये तो वो पार्शियल होगी ना, हल्ले से जैसे दिखते हैं, जैसे बाकी गैलेक्सीज तो हम पूरा देख सकते हैं। जी। तो छोटे टेलीस्कोप से देखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन लोग क्या करते हैं कि टेलीस्कोप के साथ कैमरा लगा के लंबा एक्सपोजर लेके फोटो लेते हैं, कई घंटे की फोटो लेते हैं, कई घंटे में पूरा स्ट्रक्चर देखना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये गैलेक्सीज हमसे बहुत दूर हैं, उनकी लाइट जो आती है वो बहुत फेंट लाइट आती है, बिलियन लाइट ईयर्स और सो। Yes, you mentioned, yes. Now you mentioned one experiment using one rectangular telescope and a circular telescope and light falling on it, and then you mentioned that it remains in the direction of the sun for around 6 minutes or so, and 6 minutes is pretty long time for observations. In that light, can we understand the utility of GONG, that is Global Oscillation Network Group Observatory, which is one we also have at one in Udaipur, because that appears to be giving you the to be in front of the sun for a pretty long time, isn't it so? So as you mentioned, GONG is actually taking continuous measurements. Now there is a follow-up of GONG. So let me explain. What people wanted to study was that is the surface of sun still? We don't expect it to be, because there are things happening over there, because of which, just like the surface of a swimming pool, it is always undulating, the surface of the sun is also undulating. But what can be done is that
is that we can study these oscillations. And because these oscillations go through the sun, these fluctuations go through the sun, by looking at them for a long time, we can tell the structure of the sun. We can figure out the structure of the sun. So that is one observation which is going on. The other is places like Kodaikanal Solar Observatory or Udaipur Solar Observatory, or now coming up at Pangong Lake in Ladakh, the solar observatory over there. What they do is that they have a similar arrangement of a mirror, but once they make the image, they place a block in front of the sun. So then they can see around the sun. So the measurement, which was so difficult for Eddington and Dyson and others, they had to plan for many years. They had to analyze the data. It took them many months to analyze the data. Such observations can be done routinely in these solar observatories. Yes, that's great. That's great indeed. You mentioned about grazing angles to be 0.84 on the basis of the Newtonian mechanics, and then with the general theory of relativity, we improved this number to be 1.68 seconds. Are these measurable? These are the theoretical numbers or the experimentally verified? This is the theoretical number which has now been tested observationally many times. Okay, so these are pakka. I don't have a slide here. Okay. In 2017, when there was a solar eclipse in Americas, one amateur astronomer repeated the experiment of Eddington and Dyson, and he published a paper. And it's interesting that 100 years down the line, the equipment which is needed is available with anyone and everyone who has some amount of money. Yes, there are some interesting curiosities by our children which we are receiving from through different portals, different systems. You mentioned about the lensing, and then you mentioned about the bending of light beams around the black holes. Can we see our head? Can we see the back of our head ever? Yes, but the difficulty is that if you want to see the back of your head, you have to be so close to the black hole that you will fall into the black hole. Yes, but theoretically, yes, you can. How much mass? Yes. How much mass should be is expected to be? No, there is no. So basically, you want the black hole to be large enough so that tidal forces don't tear you apart. Okay. So if something which is more massive than, let us say, 10 times the mass of sun, that should be enough. Oh, that's great. So yes, it's not only optical mechanisms which can show us our back, but this is the gravitational, the natural phenomena without using any accessory or any gadget. True. Yes, using these lensing mechanisms which are occurring due to a mass, can we see always, or can we there are some mechanism which we cannot see? Sorry, I mean, okay, let me repeat. Can we see lensing, gravitational lensing, due to a mass, due to a small mass that we cannot see? Yes, we can. Like I showed one plot to you about lensing by a planet. Yes, this is done by a planet around another star. We cannot see this planet. Okay. So we get the signatures. We get the signatures of these planets through different mechanisms which are occurring maybe some light years ago. Yes. So we can see the effect of the planet on the orbit of the star. Okay. So we know it is there, but it is discovered through lensing, and we discovered a black hole which is just moving around in our galaxy by its lensing of it. We cannot see the black hole. There is nothing near the black hole. Yeah, but we see recently a photograph of a black hole is being released, which shows some light patches outside the black hole. Yes, but that is a very massive black hole. Massive black hole. Okay, so this black hole is only around 4 to 5 times the mass of sun. The other one which we are talking about, this one, this is actually a billion times the mass of sun. A billion times of a mass of sun. That's huge indeed. That's huge indeed. Black hole at the center of our own galaxy is 4 million times the mass of the sun. Dr. Sir, you showed a slide in which you were demonstrating
the gravitational lensing in a galaxy. Can we get that slide back? Even before initially. I know, I'm going. Yes, this one. yes. No. Even before, where you were explaining the bending of light. Yes, this is. In this diagram, we can see it very nicely. The lensing. What are the dimensions involved? Where we can see the galaxy? I am asking the same question, probably in little different ways. The size of the galaxy. Now I am asking about the size of the galaxy. Yeah, so this is a slightly exaggerated cartoon, because in this, if you look at it, the bending is by many degrees. It's huge bending. Yeah, so that is exaggerated, because if I draw it to scale, then either you will not see the source, or you will not see the galaxy which is doing the bending, or you will not see us, because it will become extremely thin and very long kind of a drawing. All right. So this is an exaggerated drawing. So, but this has the angle of around say 1 second or so. Yes. This lensing is at a bending is around 1 degree or 1 second or so. Am I right? It is only around 1 to 2 arc seconds or smaller. Or even smaller. So thank you very much, Dr. Saab. We do not have much questions, but the next, let us see that we will be getting the fresh observations during the solar observation, total solar eclipses, which are going to take place soon. The first one is 2023, which will take place in Indonesia. How long will it be? Sorry? We are going to have the next solar eclipse, right. Total solar eclipse in the part of Indonesia, Australia, New Guinea. Yeah, so typically total solar eclipses last for 1 to 2 minutes. And yeah, so the difficulty is that the major difficulty in observing these is that you can never predict whether it will be cloudy or clear. So now the one way which was done in around 1990 or so, 1992 or so, when total solar eclipse took place in India, yes. That we had experiments through, India also had some experiments through AN-32 aircraft, so going beyond the clouds, etc. Right. So that can be done, but if you are on a flight, then making specific observations is a little bit difficult. Oh, that's great, yes. Taking so much of... The people do not try to repeat Eddington's experiment so much because there are better ways of doing the same thing now. That's great. For example, we have a space probe named Gaia. Yes. Which is measuring positions of stars to such an accuracy that even 120 degrees away from the sun, it can detect bending. Oh, that's great. That's great. I never knew it. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Bagla, once again in being with us. Thank you once again. We will be contacting you again. Simran, it's all yours now. Of course. Thank you so much, sir. And once again, thank you, Professor Bagla, from NCERT, for apprising our viewers about this interesting topic, that is gravitational lensing. Thanks a lot. Thank you. Thank you. So we are going to have next session on our 10th of June, when we are going to have Pankaj Kumar Gupta from Waterloo. He is working in the hydrology lab, and he will be talking to us on soil water quality management. Most likely he will be with us in the studios at NCERT, in NCERT. So looking forward meeting you again on 10th of June. That will be our 34th session in the series. Thank you very much. Of course, sir. I'm sure that they will be eagerly looking forward to another session that we'll be conducting on 10th of June. Thanks a lot to all the viewers who have been an active part of the conversation, and thank you from the entire NCERT family to Professor Bagla for being a part of our conversation, and it's an honor to have you with us in the conversation. Thank you everyone. Stay connected to NCERT till we are back with another session. Namaskar.